I think when you walk into a set like this, where they've already created relationships, this was a really tight set and a tight crew. They've worked together, they've created this incredible, show, and they've created incredible relationships with each other. So when you walk into it, you're embraced in that kind of warmth, but also you're quite aware that everyone knows their job really well, and it's all great that you like them, but if you don't do your job, then it's very disappointing for yourself. So I had a lot of fun on this set, but I was very, very aware that anything that I felt like, if there was a day in which I felt I didn't perform very well, it really hurt. It hurt so much only because of the level of commitment that everyone had to the story, and so I didn't feel it clouded, my being a fan clouded my process in any way. In fact, it made the process even more sacred in the sense that I really wanted to give it my best, because I knew this is a rare thing. It's not going to come again in my life, to play a part like this. I don't know. I never think like that. The only thing I can say that I already said it, because of the rise of the OTT, the liberation that writers have, and the directors and the producers, that liberty comes to us. I mean, who will write Paatal Lok for a film? I don't think. And कोई लिख भी देगा तो शायद कोई बनाने की हिम्मत नहीं करे। बट उसके अलावा नहीं सोचता हूँ मैं मीम कल्चर से क्या स्टारडम हुआ या ये नहीं हुआ, मैं शायद जनरली नहीं सोच पाता हूँ सब। काम से मतलब होता है वो कर देते हैं, बाकी सर माथे पे जो भी उसकी वजह से हो रहा है वो सब बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मीडिया एंड द लाइफ इज सो फास्ट इन these things, सोशल मीडिया के ऊपर, और ये सब चीज़ें आई थिंक पीपल पिक इट अप वेरी फास्ट, और फिर उनका एंटरटेनमेंट, उनका जो भी है वो बहुत सही है, अच्छा लगता है वो सब होना, पर उस तरह से सोचते नहीं है कि इसकी वजह से स्टार्टअप खड़ा होता है। मैं सिर्फ खुश इस बात से होता हूँ कि अच्छी कहानियाँ मिल जाती हैं उसके बाद। पाताल लोक की वजह से मुझे थोड़ा बेटर एक्टर समझा जाने लगा। मैं जनरली बात बोलता हूँ कि भाई सुदीप भाई की कलम ने ना एक आम साधारण एक्टर को थोड़ा सा साधारण बना दिया। वो उनकी कलम का वो है, उनके शब्दों का वो है, नहीं तो ये जयदीप पहले भी यहीं था। तो किसी एक राइटर ने इतना भरोसा दिखाया आपके ऊपर, किसी एक मेकर ने आपके ऊपर इतना भरोसा दिखाया कि आप वो करो, और बाकी हो गया। एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेना ना, मुझे लगता है ये एक शुरुआत होती है उस क्राफ्ट को समझने की। आप एक सेट पे जब जाते हो तो आप एक पूरी यूनिट का हिस्सा हो। इफ यू कांट बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस ना, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स बिकॉज दैट यूनिट इज नॉट वन। बुरा काम किया जाता है, अच्छा काम हो जाता है। मुझे लगता है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मुझे लगता है मेरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि मेरा बेसिक ये है कि मुझे उस पजल में फिट होना है, मुझे उस यूनिट में फिट होना है जहां मैं वो काम कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं फील करना कि मैं एक एक्टर हूं तो मैं बाकी लोग हाँ ठीक है मेरे लिए बनाओ तुम लोग। मुझे बहुत मजा आता है उस फील्ड में कि मैं उस प्रोसेस का हिस्सा हूं। तो अगर वो अच्छा बने तो सबके लिए बने, सब उसके हिस्सेदार हो। अगर बुरा बने तो फिर सबके लिए बने। मैं अकेला जिम्मेदार न ठहराया जाऊं खराब फिल्म के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी उसका हिस्सा थे। और ना ही मैं अकेला जिम्मेदार ठहराया जाऊं इस बात के लिए कि बहुत कमाल बना, क्योंकि बाकी लोग भी उसका हिस्सा थे। तो मेरी ट्रेनिंग वो है मेंटली। प्रिपरेशन वाइज ये है कि मैं वही सुदीप भाई ने एक बार बात हो रही थी कि इन्होंने बोला कि यार आप है ना थोड़ा बहुत एक्टिंग सिखाओ लोगों। मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है,
क्योंकि वो बहुत अलग जॉब है. बट मैं उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक 70 to 80% ऑफ द टाइम, एन एक्टर हैज टू बी रियली अवेयर कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो. किरदार की बात कर रहा हूँ मैं. और जब एक सीन शूट कर रहे होते हैं ना, आधी चीजें कॉमन सेंस से ठीक हो जाती है. अगर आप थोड़ा सा भी, आप एक अवेयरनेस है आपकी कि अच्छा ये किरदार है और मैं ये हूँ, और वो जो एक तालमेल बनता है ना. बाकी 20% है कि आप उसमें क्या कुछ नया डाल सकते हो, क्या कुछ नया थोड़ा सा बेटर बना सकते हो, जिसको हम बोल देते हैं अरे उसका मैजिक टच है ये. वो बाद में होता है. बेसिक, बहुत बेसिक्स का आता है कि आप अपनी लाइनें याद करो, आपको अपनी जगह पता हो कहाँ खड़ा होना है, आपको किस टाइम पे कहाँ मूव करना है. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि इस सीन में यहां से चल के वहां जाना है, वहां से चल के यहां बैठना है, ये बर्तन उठा के फेंक के मारना है, यहां इस वक्त आपको पानी पीना है. ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि अगर आप अपनी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में, यू आर व्हाट कंफ्यूज्ड विद सो मेनी थिंग्स, और आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरी लाइन क्या होने वाली है, तो ये इतने बेसिक पे आ जाता है कि आपको अगर अपनी लाइनें अच्छे से याद है, फिर आप बह पाओगे उनके साथ. पर अगर एक्टर हर वक्त यही सोचता रहेगा कि मेरा अगला शब्द क्या है, या वेट करेगा कि जब चलो तुम अपना लाइन खत्म करें और उसके बाद मैं इस लाइन पे बोलना शुरू करूंगा, सो नाउ योर माइंड इज ऑक्यूपाइड. बाकी किसी चीज की अवेयरनेस बाकी बची नहीं कि आपके बगल में गिलास भी रखा हुआ है, यहाँ ये गिर सकता है तो उसको कोई रिएक्शन दे सकते हो आप, बिकॉज ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट योर लाइन्स. I don't know, I'm talking too much. No. Please go ahead. And if I may add, like, he's really the most aware actor I have worked with, and that is the first quality of his that comes to my mind when I think of him, is awareness. You know, it's like when he walks onto a set, he's completely aware of the props that are there, where the light is, where the camera is, where the other actor is going to be, what the other actor is doing, what he's saying. He's fully present. He is not one of those actors who is distracted, who is looking at his phone, or he has got 10 other things in his mind. He is fully there, 100%. Like, I remember when we were shooting the climax of season 1, it was Hathiram and Sanjeev Mehra, and Hathiram goes to Sanjeev Mehra's office and he confronts him and tells him the whole story. And so we blocked the scene, and then we were like, okay, let's shoot, and we start shooting. And before he starts talking, there was a little prop, one of those pelicans that you keep on the desk, and which, you know, which go up and down. And before he starts talking, he says, "मैं कहानी सुनाता हूँ," which was the line, and then he does this to the pelican, and it starts going like this, and then he starts talking. And when he finished his lines is when he stopped it, and he got up and left. And I was like, man, we never told him to do that. When did he find that out? What he did, the sharp actor that he is, he walked onto the set while we were blocking and rehearsing, we were doing our own thing. He walked around looking at the entire office, so that when he's walking into that set, he is not, oh acha ye hai, ye yahan baitha hai, main yahan baitha hu, and what are the things. He's aware of everything that is there, and how to use them, and how to use them to his advantage, and how to use them to the advantage of the scene. It's a very rare, very beautiful quality to have. You know. Articulate this, because I think it's really changed over time, and it changes with every project. But I relate to what Jaideep is saying. For me, at the moment, I am most open when I'm relaxed, to possibilities, how a scene can play out in 100 different ways when I'm relaxed. And so all the work is before. I asked all my 1,000 questions to Sudeep, tried to change his dialogues, well-written dialogues, made those cardinal mistakes. I need to feel like, I'm part of something, the people, and because I came out of 2 years of being a caregiver to a parent, and I realized in those 2 years how much I love what I do, and what it feels like when it's taken away. And so when I came to the set of Paatal Lok, after that 2 year,
I was in love with people, with life. Yeah. And it was great. It was really great to just be on a set where you care for every person on that set. And I know that it doesn't come from a place of just liking people, because that's not the person I thought I am. It comes from really believing in a script. I think when you read something that makes you that happy, to just read, the excitement of putting your body to tell that story, to be a part of that story, the process for me was just one absolutely powered by a sense of absolute excitement and love for the story. So I think my sense of my process in this one, I had to do some dialect training, because she's from Nagaland, she's Assamese, and she works in Nagaland. So that Ohmiya, a slight undertone with the Nagamese. I mean, those dialect things, these things help me a lot. Certain technical things which are unattainable when I start a project gives me something to feel like I'm working, because otherwise you don't trust your process when a script is so good. Kuch kaam hi nahi karna hai, right? If that Nagamese wasn't there, I would have felt extremely nervous, because after sab kuch to ho gaya hai, Sudeep has done all the work, so I have to just show up and flow, and thank God I felt like I had something to do in terms of homework. But the process was being aware. I mean, you have actors like Jaideep to play off in a scene, and a story like this where you are saying one line, but that line has so much in it. So just the pleasure of saying it, like it means very little, but it means so much. Just the pleasure of being able to it's small things, being able to enjoy the small, big things. And I think, just being relaxed, being open, and just knowing you're surrounded by people who you really like and respect, actually. It makes a huge difference, because these are long processes, जो जितना भी अभी बात हुई है उसमें ये ज़रूर है कि we are also very excited and waiting for the response of Paatal Lok season 2, because हमने बहुत मेहनत से बनाया ये, मतलब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है इसके ऊपर. और जैसे सुदीप भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसका बेस वहाँ से शुरू होता कि जो हो चुका था हम उसको दोबारा नहीं करना चाहते, मतलब वो दोबारा नहीं करना चाहते, वहाँ वो लिबर्टी हम तक पहुंची, इतनी सी बात है. और मैंने आज पहली बार अभी इन्हीं के हाथों से ट्रेलर देखा है, तो मैं थोड़ा सा अभी जोन्ड आउट हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि लोग उसको कैसे रिसीव करते हैं.